अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करेंगे। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का संचालन विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के तौर पर विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल और अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है और हमारे देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। इस राष्ट्रव्यापी पहल में संवैधानिक व्यवस्था में उल्लिखित आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और उत्तरदायित्व की भावना जगाने की परिकल्पना की गई है। इस पहल के माध्यम से हर नागरिक को विभिन्न माध्यमों से इस अभियान में शामिल होने का अवसर मिलेगा और ये उन्हें देश की लोकतांत्रिक यात्रा में सार्थक रूप से योगदान करने के सशक्त बनाएगा। अभियान के दौरान जो कुछ विषय शामिल किए गए हैं उसमें है सबको न्याय हर घर न्याय का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना, उन्हें सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रेरित करना, न्यायिक सहायक के माध्यम से आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों के लोगों को उनके घर पर ही विभिन्न नागरिक केंद्रीय कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर न्याय सेवा मेला भी आयोजित किया जाएगा जो व्यक्तियों के लिए विभिन्न कानूनी और साथ ही सरकार की अन्य सेवाओं और योजनाओं पर मार्गदर्शन, जानकारी और समर्थन प्राप्त करने के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा। नव भारत नव संकल्प नाम की एक अन्य गतिविधि का उद्देश्य जनता को पंच प्राण प्रतिज्ञा पढ़कर पंच प्राण के संकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पंच प्राण रंगोत्सव यानी पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता के भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पंच प्राण अनुभव जिसमें रील वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता होगी, इसका भी इसमें समावेश किया गया है। इसके साथ ही नागरिकों को संविधान पर अपने ज्ञान को आकर्षित करने के लिए ये सब गतिविधियां की गई हैं और ये सभी गतिविधियां माई गॉव प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएंगी। तीसरी गतिविधि विधि जागृत अभियान का उद्देश्य जो प्रो बोनो क्लब योजना के तहत लॉ कॉलेजों द्वारा अंगीकृत गांवों में पंच प्राण का संदेश देने के लिए छात्रों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य बहुत ही आकर्षक, मनोरंजक और यादगार तरीके से अधिकारों, उत्तरदायित्वों और अधिकारों की कानूनी जानकारी का प्रसार करना है। इसका उद्देश्य ग्राम विधि चेतना, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी पहल के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचना भी है। कार्यक्रम के दौरान न्याय सेतु का शुभारंभ भी किया जाएगा जो एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य आखिरी सिरे तक कानूनी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और विस्तारित करना है। यह कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह और कानूनी सहायता के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफेस प्रदान करेगा और इस प्रकार एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज को सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान न्याय तक पहुंच पर योजना, उपलब्ध पुस्तिका, नवोन्मेषी समाधान से युक्त दिशा का भी विमोचन किया जाएगा। दिशा योजना टेलीलॉ प्रोग्राम के अंतर्गत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित टेलीलॉ सिटीजन मोबाइल ऐप और करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के उपयोग के माध्यम से 67 लाख से अधिक नागरिकों को मुकदमे पूर्व सलाह से जोड़ा जाएगा। न्याय बंधु कार्यक्रम का उद्देश्य प्रो बोनो लीगल सर्विसेज कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण और एक वितरण ढांचा तैयार करना है। इसने 24 बार काउंसिलों में 10,000 से अधिक प्रो बोनो अधिवक्ताओं का एक नेटवर्क बनाया है। 25 उच्च न्यायालयों में न्याय बंधु पैनल बनाए हैं और देश के 89 लॉ स्कूलों में
प्रो बोनो क्लबों का गठन किया है। इसके अलावा देश भर में 14 एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे वेबिनार और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही ये आयोजन जो आज किया जा रहा है वो न्याय विभाग के साथ अपने सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए भाषणी और इग्नू प्रतिनिधियों को भी एक साथ लाएगा। भाषणी के साथ साझेदारी न्याय तक पहुंच में भाषा की बाध्यताओं को समाप्त करेगी। भाषण के माध्यम से इसके समाधान से पहले ही न्याय सेतु कानूनी सेवाओं की टेली सुविधा में शामिल किए गए हैं। इग्नू के साथ साझेदारी से पैरा लीगल को कानूनों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाण पत्र प्राप्त करने, उनके शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने और कानूनी सहायता एवं समर्थन के विभिन्न क्षेत्रों में इनके कौशल और रोजगार क्षमता में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। Another activity which will see the unveiling today is the Nav Bharat Nav Sankalp, which aims to encourage the masses to embrace the resolutions of Panch Pran by reading the Panch Pran pledge. The citizens would get the opportunity to showcase their talent and creativity by participating in Panch Pran Rangotsav, that is poster making competition, Panch Pran Anubhav, that is reel making or video making competition. The citizens will also get the chance to test their knowledge on Constitution in an engaging way. The activities would be hosted by the MyGov platform. The third activity, Vidhi Jagrati Abhiyan, aims to involve the students to carry the message Panch Pran in the villages adopted by law colleges under the Pro Bono Club scheme. It aims to disseminate the legal information of the rights, responsibilities and entitlements in very engaging, entertaining and memorable way. It also aims to touch the vulnerable sections of society through the Gram Vidhi scheme Chetana, the Vanchit Varg Samman and the Nari Bhagidari initiatives. During the event, Nyay Setu will be launched, which is a significant and transformative step that aims to extend and expand the reach of legal services till the last mile. It will provide a unified legal interface for legal information, legal advice and legal assistance, and thus enable a more inclusive and just society. The event will also witness the release of the achievement booklet of the scheme on access to justice, designing innovative solutions for holistic access to justice, Disha. Under Disha scheme, Telelaw program has connected 67 lakh plus citizens for pre-litigation advice through the use of Telelaw Citizens and mobile app via 2.5 lakh common service centers, CSCs, situated in 36 states and union territories in the country. The Nyaya Bandhu or Pro Bono Legal Services Program aims to decentralize and create a dispensation framework for the Pro Bono Legal Services Program. It has created a network of 10,000 plus of pro bono advocates across 24 bar councils, created Nyay Bandhu panels in 25 high courts and constituted pro bono clubs across 89 law schools in the country. In addition to this, more than 7 lakh beneficiaries have been sensitized and made aware of their legal rights and duties and entitlements through webinars and legal literacy programs being implemented through support of 14 agencies across the country. Simultaneously, the Hamara Samvidhan Hamara Samman campaign will also bring together representatives from Bhashini and Indira Gandhi National Open University, IGNOU, to formalize their collaboration with the Department of Justice. The partnership with Bhashini would break the barriers of language in accessibility to justice. The solutions of Bhashini have already been embedded in the Nyay Setu
facilitation of legal services. The partnership with IGNOU will open the opportunity for paralegals to acquire certifications in diverse fields of law, enhance their educational opportunities, and increase their skills and employability across the sectors of legal assistance and support. The Hamara Samvidhan Hamara Samman program will be inaugurated by the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar. The Minister of State for Law and Justice in charge, Shri Arjun Ram Meghwal, and the Attorney General of India, Shri R. Venkataramani, as Chief Guest of Honor, would be present on the occasion. माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ थोड़ी देर में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करेंगे। जैसे ही माननीय उपराष्ट्रपति डॉक्टर अंबेडकर सेंटर नई दिल्ली पहुंचेंगे, आपको हम सीधे कार्यक्रम में लिए चलेंगे। आइए तब तक सुनते हैं देश का। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़
इस समय डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में ले चलते हैं। The architects of constitutional progress, the Honorable the Vice President and the Honorable the Law Minister, is a great privilege for me. Why do we need to celebrate a constitution? None of us here, I suppose, have witnessed the freedom struggles and have probably been even keen to read the travails which those who fought for freedom have made it possible for us today. And it's available only in history books, chronicles, writings, so on and so forth. But if only we were able to go back in point of time and try to visualize what made and what contributed to the freedom of the country. And the great idea of constitution being born with us is something very important. Law schools perhaps can teach you only a very little of them. But I suppose when we assemble here in such gatherings, and we are told that we are part of a great journey ahead in future, carrying the idea of constitution with us. It's something very different. I find a lot of law students here, and all that I can appeal to you is this idea of a constitution is now part of human psyche all over the world. And why do we need to celebrate this idea of constitution? It's not merely because we have a freedom and a free country, but something beyond that. As I go to and visit law schools, I keep telling law students that all of us as law students and lawyers have a common human social responsibility to the country and to the most deprived sections of the community for whom the constitution means much more than who are in the higher ladders of social and economic life. And if we assemble in meetings like this, in congregation like this, I suppose we tell ourselves, remind ourselves, and then continue to remind ourselves that our commitment to the common social responsibility is something far more fundamental than anything else in life. If only one has to recall what Baba Sahib Ambedkar did for the making of the Constitution, the deepest feelings he had for making the Constitution a living document, I think all of us must go through that at a very individual level, at a very personal level. Otherwise, I think it remains a mere reading which can dry up after a point of time. Therefore, it is very important that in congregations like this, when we start celebrating the Indian Constitution, we are not stopping only with the text of the Constitution, but we are talking about the march of the Constitution after the Constitution became part of our life. 75 years of our constitutional life is something wonderful. When the American Constitution was framed in 1789, Thomas Jefferson and James Madison, who were the two famous architects of the Constitution, said a Constitution must not be ruled by those who are dead, namely that every generation the Constitution must be rewritten. And Thomas Jefferson thought every 15 years there must be a rewriting of the Constitution. But what is the rewriting of the Constitution? People's participation actively in the working of the Constitution. It's not merely legislatures, parliaments, courts, but people's active participation in making the Constitution a living document is what makes it a generation after generation of a living Constitution. And that's what we are talking about, and thus we are assembled here today. I suppose all of us will commit ourselves to the wonderful making the Constitution a living document. Now, about 200 years of Constitution making across the globe, I find that about 780 attempts to making constitutions. A country like France had more than 15 to 20 times rewriting the Constitution because there were revolutions, there were coups, the military coups. But unfortunately for us, we passed through all those kind of political, social turmoils and temptations and has remained united as a nation. There were challenges within the Constitution, challenges externally in the political sphere. Today we are globally challenged. Therefore, in order to meet these global domestic challenges, how do we make the Constitution and continue to make the Constitution a living document? The only answer is people's active participation, commitment to every aspect of the Constitution. And I'm sure that as we go ahead in another 75 years, we would have celebrated much more than what the American Constitution celebrated over 200 years of its existence, or what an unwritten Constitution of Britain has done over a long period of time. I suppose in times to come, with its people's participation, commitment, the Constitution of India, its story, its history would have been written very, very differently.
And in order to make that right thing very differently, we are assembled here today and mark a beginning over a long period of time. Thank you for your attention. I once again say I am privileged to be part of this congregation. That was addressed by the Honorable Attorney General of India, Shri R. Venkatramani, at the inaugural session of the Hamara Samvidhan Hamara Samman campaign. And now, the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar, will be inaugurating the Hamara Samvidhan Hamara Samman campaign, and he will also launch the Nyay Setu and release the Disha Achievement Booklet, and also witness the exchange of Memorandum of Understanding between the Department of Justice, IGNOU, and Bhashini. हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करें। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ रिमोट का बटन दबाकर हमारा संविधान हमारा सम्मान इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। Yes, and we can see that the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar, has inaugurated the Hamara Samvidhan Hamara Samman, our Constitution, our honor campaign, and जोरदार मंथन के बाद भारत के लोगों ने स्वयं को अमृत कलश के रूप में दिया एक नायाब उपहार, संविधान। इसी जीवंत और पवित्र मार्गदर्शिका के बल पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की विविधता भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोता है हमारा संविधान। संविधान है हमारे देश का महाप्राण, जो हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ-साथ प्रतिष्ठा, गरिमा और अवसर की समानता भी प्रदान करता है। गर्व है हमें अपने संविधान पर, जो हमें प्रकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वतंत्रता की 75 साल की गौरवपूर्ण यात्रा हमने इसकी मदद से पूरी की। समय समय पर जरूरत के अनुसार इसे और बेहतर किया। वंचितों तक इसकी पहुंच को और आसान बनाने को प्रतिबद्ध हैं हम। इसलिए लोकतंत्र के 75वें वर्ष में पूरे वर्ष हम करेंगे संविधान समर्पित। सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति जैसे विविध अभियानों का आयोजन। संविधान में लिखी समानता, कर्तव्य और अधिकारों के आधार पर ही हम संकल्प से सिद्धि की मंजिल भी हासिल करेंगे। हमारा संविधान, हमारा सम्मान। And after that was a short film on the inauguration of the Hamara Samvidhan Hamara Samman campaign, and the Honorable Vice President will now launch the Nyay Setu tele-facilitation service, and this also he will be doing by the press of the button of a remote, and also the function will witness the exchange of Memorandum of Understanding between the Department of Justice, the Indira Gandhi National Open University, and the Bhashini. साथ ही इसमें जो एक्टिविटीज हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अभी हमारा संविधान पोस्टर हमारा निर्माण सम्मान जैसी एक्टिविटीज इस विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों के का माध्यम उद्घाटन किया से देश के जन जन तक और इस कैंपेन को, इस माननीय अभियान को पहुंचाने का एक उपराष्ट्रपति के प्रयास साथ किया जाएगा। अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस माननीय समय आज का उपस्थित हैं। भारत डिजिटल भारत है और हम जानते हैं जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं तकनीक के माध्यम से उसका हल भी निकाला जाता है और जीवन सुगमता को भी आगे बढ़ाया जाता है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाएं पहुंचे, इसके लिए टेली सुविधा सेवा अहम माध्यम भी बन रही है। और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से आदरपूर्वक अनुनय करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर टेली सुविधा सेवा न्याय सेतु लॉन्च करें। माननीय उपराष्ट्रपति कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह और कानूनी सहायता के लिए एकीकृत कानूनी इंटरफेस प्रदान करने हेतु न्याय सेतु का शुभारंभ कर रहे हैं। रिमोट का बटन दबाकर। चाचा प्रणाम। प्रणाम। चाचा ड्यूटी जा रहे हैं, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बेटी हमारी बेटी। जाओ बिटिया।
ओए होए कहाँ चली? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से परेशान हूँ। मेरी मदद कीजिए। भारत में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको और सहायता की जरूरत है तो कानूनी सलाह के लिए लीगल एडवाइस को चुनें और कोर्ट में वकील के प्रतिनिधित्व के लिए लीगल असिस्टेंस पर क्लिक करें। अगर आपको अब भी किसी मानवीय सहायता की जरूरत है तो आप हमारे इस टेली फैसिलिटेशन सर्विस के तहत IVRS बेस्ड हेल्पलाइन सॉल्यूशन को चुन सकती हैं। इसके लिए आप 14454 डायल करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से बहुत परेशान हूँ। मेरी मदद कीजिए। आपके मामले को देखते हुए आपकी बात अपने काउंसलर से कराता हूँ। आप अपनी बात इनसे खुलकर कहिए। इससे आप अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करेंगी। इसके पश्चात मैं आपको लॉयर से कनेक्ट करा दूंगा। लोगों तक न्याय की पहुंच को और आसान करने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार की पेशकश न्याय सेतु, एकदम गोपनीय और सुरक्षित माध्यम जिसे समाज के सभी वर्गों के साथ साथ खास तौर पर दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। न्याय सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कानूनी जानकारी, टेली लॉ और न्याय बंधु की सभी सेवाओं का है समागम। न्याय सेतु, सभी होंगे अब और सशक्त। न्याय पाने की राह अब होगी आसान। That was a short telefilm on the Nyay Setu tele-facilitation service, which was launched by the Honorable Vice President of India. विशेषकर मजबूत लोकतंत्र के लिए और एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस यानी दिशा सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ, कृपया दिशा उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन करें। दिशा के तहत टेली लॉ प्रोग्राम में टेली लॉ सिटीजन्स मोबाइल ऐप काम करता है। न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं और लीगल लिटरेसी यानी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें देश भर के 7 लाख से अधिक लाभार्थी इसका फायदा भी उठा चुके हैं। ये है दिशा उपलब्धि पुस्तिका। माननीय उपराष्ट्रपति ने दिशा उपलब्धि पुस्तिका का उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। That was the release of the achievement booklet Disha, and that is और हमने आपने सबने एक कहावत जरूर सुनी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। और भाषा विधिक सेवाएं पहुंचाने में बाधा न बने, इसके लिए न्याय विभाग भाषिनी और इग्नू के साथ MOU कर रहा है और अब सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा इग्नू के बीच सहमति पत्रों के आदान प्रदान के लिए मैं न्याय विभाग के निदेशक श्री बी चंद्र मोहियार तथा इग्नू के डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ मिस स्वाति पात्रा को आमंत्रित करती हूं। now a memorandum of understanding has been signed between the Department of Justice and the Department of Justice, Government of India, Indira Gandhi National Open University for जोरदार तालियों से इस the पल का MOU स्वागत has been करें। signed and has been handed over to the Honorable Vice President of India, and a round of applause for both the Department of Justice and Indira Gandhi National Open University. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा भाषिनी के बीच सहमति पत्रों के आदान प्रदान के लिए मैं न्याय विभाग के निदेशक श्री बी चंद्र मोहियार तथा भाषिनी के CEO श्री अमित नाग को आमंत्रित करती हूँ। And now the MOU between Department of Justice and Bhashini. कानूनी सेवाओं की टेली सुविधा में शामिल किए गए हैं।
This will go a long way in facilitating tele-law services, and the Honorable Vice President and the Minister of State, Independent Charge, Law and Justice, applauding the signing of the Memoranda of Understanding between Department of Justice and IGNOU and the Department of Justice and न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया आज के इस अवसर पर अपने मनोभाव प्रस्तुत करें। तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। And now the address by the Honorable Minister of State, Independent Charge, Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal. हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में मंच पर हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब, मंच पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी जी, इग्नू के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, हमारे सेक्रेटरी जस्टिस डिपार्टमेंट में राहटे साहब, संजय राकेश जी, और मुझे यहाँ नजर आ रही है वेंकटरमणी जी की धर्मपत्नी भी, लक्ष्मी जी भी, आपका भी धन्यवाद, मातृशक्ति को प्रणाम, और नालसा की सेक्रेटरी संतोष भी नजर आ रही है। सभी यहाँ उपस्थित जो इस कार्यक्रम में आए हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से, सभी गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, एक मन में प्रश्न आपके आ सकता है कि हमने 24 जनवरी ही क्यों चुना। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम गणतंत्र के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमने 24 क्यों चुना, इसके लिए आपके मन में भी कुछ कौतूहल हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है। तो एक दो जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। प्रश्न कई हो सकते हैं। पहले तो ये वर्ष 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। दूसरा, हमें आज के दिन से ही ये शपथ लेनी है कि हम 24/7 काम करेंगे, 24 घंटे ही काम करेंगे। ये संविधान निर्माताओं ने भी इसकी बात कही है। और अगर इतिहास के पन्नों को आप खंगालेंगे तो 24 जनवरी 1950 को जो अभी हम जब उपराष्ट्रपति जी आए थे और इनके सम्मान में जन गण मन नेशनल एंथम गाया गया था, वो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। ऐसे कई विषय जिसके कारण ये 24। अब इस 24 में देखिए, न्याय सेतु के माध्यम से टेली लॉ, न्याय बंधु, इसकी जानकारी आप सबको दी है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है वंचितों को भी न्याय मिले। किसको? तो छूट गए हैं। कोई बड़ा आदमी है, वकील कर सकता है, कोई गरीब आदमी है, वकील के पैसे भी नहीं है। वंचित जो छूट गए हैं किसी कारण से, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, सामाजिक परिवेश भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, वंचितों को भी न्याय मिले। तो आज एक बड़ा न्याय मुझे लगता है मिला है। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देनी चाहिए और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न मिलना, ये भी वंचितों तक भारत रत्न की पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये न्याय का दिवस ही। इस विषय में काफी बातें आई है, अमृतकाल है। देखिए, हमने संविधान की जब हम बात करेंगे, हमारा संविधान और हमारा सम्मान, तो हम थोड़ा अगर इसको आगे चलते हैं तो हमारे संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई है जिसके कारण कोई ऐसा नहीं रह सकता कंफ्यूजन में। किसी देश के संविधान में इतना स्पष्ट लचीला भी है हमारा संविधान और कठोर भी है। हमारा संविधान इमरजेंसी में कैसे काम करेगा, इसकी बात भी कही गई है। हमारे संघीय ढांचे को भी महत्व दिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पे एकात्मक भी हो जाता है।
ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसलिए हमारे संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना, उसका सम्मान करना इसलिए जरूरी है कि हमारे आसपास ही बहुत से देश आजाद हुए थे और हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें, हमारे पड़ोस के मुल्कों की बात करें तो कहीं न कहीं अशांति नजर आती है। हमारे पड़ोस के मुल्क में अशांति है, इधर वाले मुल्क में भी और उधर वाले मुल्क में भी बहुत ज्यादा शांति नहीं है। नीचे दक्षिण में किसी पड़ोस के मुल्क से बात करें तो वहां भी कोई ज्यादा तरक्की नजर नहीं आती। ऊपर उत्तर के किसी मुल्कों से बात करें उनकी, लेकिन हमारा देश निरंतर प्रगति क्यों कर रहा है? हमारे देश में शांति क्यों बनी हुई है? हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों हुआ है इन 75 सालों में? अगर उसका एकमात्र कोई कारण है तो हमारा संविधान है, हमारा संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अभी आप जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन कर रहे थे तो आप भावुक भी हो रहे थे उनकी तस्वीर को देख करके। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका नाम भी शायद भीम ऑडिटोरियम है। भीम ही है ना नाम इसका नाम भीम ऑडिटोरियम है। तो भीमराव अंबेडकर जी को आपने नमन किया। भीम ऑडिटोरियम में हम सबको आप ज्ञान देंगे और आप भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो यहां से जो आवाज जाएगी, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है सर हमारा, यहां से जो आवाज जाएगी वो दूर तक जाएगी, गांव भी जाएगी, ढाणी भी जाएगी, शहर भी जाएगी, कस्बे भी जाएगी, सब जगह जाएगी। कोई भी स्थान हम छूटने वाला नहीं है। मैं सेक्रेटरी साहब को कह रहा था कि अगर अपने को रीजनल ऐसे प्रोग्राम करने पड़े, अगर जिलों में भी जाकर के करने पड़े, तो साल भर हमारा संविधान और हमारे सम्मान के कार्यक्रम होने चाहिए। ये एक विषय मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था। दूसरा एक विषय, एक और महत्वपूर्ण विषय मेरे ध्यान में आया तो मैं आपके ध्यान में ले आता हूं। सर, कई बार लोग कहते हैं जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में बहस सुनते हैं कि सर ये फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना परिभाषित किया होगा इसमें केशवानंद भारती केस में, लेकिन हमारे संविधान में सभी देशों की अच्छी बातें ली हुई है। इसलिए जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने एक कोट कहा था उसको कहकर के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। अन्यथा तो हम धारा 370 भी नहीं हटा सकते थे, सब हमारे संविधान में व्यवस्था है। अन्यथा तो हम 3 तलाक जैसी बुराई को भी समाप्त नहीं कर सकते थे। महिला आरक्षण का प्रावधान जिसका जिक्र अभी उपराष्ट्रपति जी कर रहे थे वो भी हम नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे संविधान में जो चीजें दी हुई है और संविधान के अनुसार ही सरकारें चल करके देश को आगे बढ़ा रही है। मैं बाबा साहब का एक कोट है जो मैं कहना चाहता हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब खुद कह रहे हैं, कोट अनकोट मैं कह रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन in as much as it establishes a dual polity. The union is not a league of states. कई देशों में लीग ऑफ स्टेट की बात कही है, यहां बाबा साहब कह रहे हैं द यूनियन इज नॉट ए लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन ए लूज रिलेशनशिप, नॉर आर द स्टेट्स द एजेंसीज ऑफ द यूनियन deriving power from it. Both the union and the states are created by the constitutions. Both derive their respective authority from the constitution. तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि कोई आदमी बड़ा नहीं है, कोई आदमी छोटा नहीं है। कोई अगर पावर ले रहा है, कोई यूं कहता है कि मैं सुपीरियर हूं, संविधान कहता है सेपरेशन ऑफ पावर है, आर्टिकल 50। संविधान कहता है कि सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं, विधायिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी। लेकिन अगर किसी को कोई अथॉरिटी मिली हुई है तो वो खाली संविधान के कारण ही मिली है। इसलिए सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान। सर्वोच्च कौन हुआ? सर्वोच्च कौन हुआ? इसलिए हमारा संविधान, हमारा सारे कार्यक्रम हमने आज रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
विधि एवं न्याय मंत्री That- श्री अर्जुन राम मेघवाल जी addressed ये हमारे by भारतीय गणतंत्र the का 75वां Honorable वर्ष है। Minister for Law and Justice, और ये हमारे Independent Charge, संविधान और हमारे देश Shri को बांटने Arjun वाले Ram मूल्यों Meghwal. का जश्न मनाने का And अवसर now है। it's time और for आज के the इस अवसर पर inaugural हमारा सौभाग्य address है कि हमारे by देश the के Honorable उपराष्ट्रपति Vice President of हमारे India, बीच उपस्थित है। Shri और आज के Jagdeep इस अवसर पर अब मैं Dhankhar. माननीय उपराष्ट्रपति जी And से before the करबद्ध speech, the निवेदन करना Honorable चाहूंगी Vice कि President अपने is आशीर्वचनों exchanging से a हमारा few words मार्गदर्शन with करें। the जोरदार तालियों से Attorney स्वागत General करें of India. माननीय And now, उपराष्ट्रपति जी का। the inaugural speech by the Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar. Honorable Minister of State, Independent Charge for Law and Justice and Parliamentary Affairs also, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Attorney General of India, Shri R. Venkatramani ji, Mrs. Venkatramani ji, Sri S.K.G. Rahate, Secretary Department of Justice, Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor IGNOU, distinguished audience, and in particular boys and girls. I am grateful that I have been afforded this great opportunity to share my thoughts with you all on the great occasion when we'll be entering after 2 days 75th year of our Republic. When I entered the premises, I had the good fortune to be blessed when I paid my tributes to the architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. He means a lot to all of us. Not only he was architect of Constitution of India, his rise to that position was not easy. It was Caesarean, very difficult. He faced great problems. He took them in stride. When I became Member of Parliament in 1989, and that was a long time after we adopted the Indian Constitution, I looked at the list of those who had been given Bharat Ratnas. Dr. Ambedkar was not one of them. It was my good fortune to be part of the government and part of Parliament that did justice to one of the greatest sons of Bharat by awarding him in 1990 Bharat Ratna, 31st March 1990. He should have been awarded Bharat Ratna much earlier. In the same stream, as indicated by the Honorable Minister, and for the same cause, a great justice has been done to another great son of soil from Bihar, Karpuri Thakurji. These two distinguished persons who have got it posthumously were entitled to this embellishment, highest civilian award during their lifetime. Remember, my dear friends, people have been given Bharat Ratna during their lifetime. It is good, belatedly, we have a mechanism where there is due recognition to the tallest people who have really created Bharat in which we are living. Amrit Kal has been utilized as a great occasion to remember those who made us proud Indians. Parakram Divas, we had the occasion to celebrate it yesterday. It took us so long to remember the contribution of Netaji, so long. But soothing to note that in past decade,
justice has been done to Netaji in various ways. Visit of the Honorable Prime Minister to Andaman Nicobar Islands, naming those islands. When 75th celebration of Netaji's army took place, Prime Minister was there at the fort. A great recognition. Our heroes of freedom, the list is long, but our boys and girls came to know as if it was in single digit. We have rediscovered our Bharat emotively, nationally, and we have Janjatiya Gaurav Divas, 15th November, Birsa Munda. Look at the way we have put our Bharat on global platform. Yoga is something which we had in us for thousands of years. But gratitude to the Indian Prime Minister of a country that is home to 1/6 of humanity, that he could make this declaration in United Nations. In the shortest time, the largest number of nations came forward to support this. And 21st June is International Yoga Divas, celebrated in every nook and corner of the planet. The last one was indeed historic. The premises were precincts of United Nations. It was our Prime Minister there, and we had the good fortune that the entire world participated. I was there at the national event at Jabalpur. A great day. Look at another great milestone, 23rd August 2023, Space Day, because Chandrayaan-3, backed by the power of both genders, landed on South Pole of Moon, created history because no country's space vehicle had landed on that part of the moon. We had Space Day. Look at another significant day. We waited for so long to do justice to half of humanity. Particularly in the last 3 decades, efforts were made to secure justice to our sisters and mothers, that they must become participants in governance by way of a constitutional mechanism. That was expressed by Ambedkarji. It fructified. And 2 days are east in history. Note them. 20th September 2023 and 21st September 2023. On 20th September 2023, Shri Arjun Ram Meghwal, whose life has been very tough, I know it personally, comes from a very vulnerable segment of society, got into civil service, facing all difficulties, became a district magistrate to be remembered by one and all, got people's mandate. He introduced that bill to give justice to half of humanity. He is present amongst us. He did so in Rajya Sabha also. And that was a proud moment because he was fulfilling the dream of our founding fathers of the Constitution, led by Dr. Rajendra Prasad and Dr. B.R. Ambedkar. He was fulfilling the aspirations which our womanhood had waited for decades. And look at the changing profile of Bharat. What was passed by Parliament, both houses, became a constitutional provision when under Article 111, Shrimati Draupadi Murmu signed it. A tribal lady occupied Rashtrapati Bhavan as the first citizen of this country. I have said all these things
because as rightly highlighted and focused by the Honorable Minister, our Constitution is finally very strong. Our Constitution has enabled us to traverse the difficult terrain and record epochal developments. If we look at our constitutional journey, we did have a dark chapter, a chapter which we can never have now. No one on the planet can generate a system, a mechanism, pernicious ecosystem, depriving human rights, putting people in jail by thousands with no rights available to them. I am referring to declaration of emergency. I want boys and girls to know when the president signed it, what hour it was, how this could happen. Constitutional prescription is loud and clear. The president is bound by the advice tendered by Council of Ministers. Was it by Council of Ministers? That was the darkest, shameful period of our constitutional history and a blemish on our otherwise sublime civilizational journey of 5,000 years. We never had those in governance going to that level as to deprive millions of their fundamental rights and putting them in jail. Those who were put in jail became prime ministers later on, many of them. That was a shameful period. That was also the time we expected another organ of the state will rise to the occasion. The judiciary. Unfortunately, for judiciary also, it is one of the darkest periods. 9 high courts in this country, 9 high courts, boys and girls, 9 high courts, in one voice, took a stand. Emergency or no emergency, fundamental rights of the people cannot be put on hold. They are ever alive. You can go to the court to vindicate your fundamental rights. Indian Constitution has enabled its citizens to directly have access to the Supreme Court under Article 32 for vindication of fundamental rights. Unfortunately, painfully, and a pain which people like Venkatramani will always harbor in their hearts. He would ever wish in ADM Jabalpur Supreme Court had not overturned those 9 high courts. But 2 of the distinguished judges of that judgment, the Chief Justice and his number 2, very distinguished judges, they had the occasion to express their public regret. One of them, the second senior most then, expressed it in an interview when he attained the age of 90 years. But friends, there can be no regret allowed when people fail in constitutional positions. When we are in a position of constitutional authority, we have no alibi. We have no escape route. We have to vindicate the trust imposed in us by the Constitution. Friends, this journey of 75 years and a little before that independence, midnight of 14th and 15th August, we had tryst with destiny. Our parliament met at midnight. The first Prime Minister ended a speech that of a different nature, which in one of my address I had called tryst with modernity. That has changed the entire landscape of our business, our governance. This tryst with modernity was also at midnight. It was the night intervening 30th June and 1st July 2017. My good friend and a great son of this country, Arun Jaitley, is not amongst us today.
He worked hard for it. The Honorable Prime Minister and the President being there unfolded the world's largest, most impactful transformational tax regime, GST. It was at midnight. This tryst with modernity. We in this country have a small section of the... We should never be against criticism. Criticism helps us. Criticism is positive. Criticism gives energy. But condemnation, thoughtless condemnation, and look at the wonders which GST has done now. When we go into the record collections every month, we are proud of it. Goods and service tax has indeed become good and simple tax, and the world is amazed at it. Look at the second technological situation which the country had. We were faced with pandemic COVID. It affected the entire planet in a non-discriminatory manner. High and mighty, rich and poor, people of all sects and religions were bled by pandemic. But ours was the only country that faced it. And while facing pandemic successfully, then for a population of more than 1.3 billion, we assisted more than 100 countries. But what is outstanding and significant is that your co-vaccine certificate was electronically available. More than 200 million people had it electronically available. The entire population had the benefit of it. A great achievement by this country. Friends, tryst with destiny, tryst with modernity, and we had on 22nd January 2024, tryst with divinity. The day is east in the history of this country for several reasons. The consecration ceremony of Ram Lalla in Ayodhya on that day marks three things fundamentally. One, this country believes in rule of law. The passage to construction of Ram Mandir took very long, was hurtful to the sentiments of millions and millions of people in the country and many outside. Every day was very painful. Still, in this land of Gandhi and Buddha, in this land which has civilization at depth of 5,000 years, it was in accordance with law. And that was a great achievement. Second, it reflected the will of the framers of Indian Constitution. I am pained and I will appeal to the Honorable Law Minister. Our young boys and girls are not exposed to the Constitution which has been signed by the members of the Constituent Assembly. That document, Honorable Minister, you will find is a different one. That document contains 22 miniatures. They are positioned thoughtfully above each part of the Indian Constitution. When you had the occasion to see a small film indicating those things, I saw what was there in the pillar at Somnath. It was there. If we look at the first part, second part, it reflects Gurukul and our ancient civilization. If you look at the miniature above part 3, the part concerning fundamental rights are quintessence to democracy. They are inalienable facets of democratic values. You cannot claim to be living in a democracy if you do not enjoy fundamental rights. We curse emergency of the darkest period
because fundamental rights were sabotaged. In that part, you have Ram, Sita and Lakshman coming back to Ayodhya. Our founding fathers of the Constitution realized this essence of our culture. When we go to part 4, directive principles of state policy, we have in the miniature indicating Lord Krishna giving his advice at Kurukshetra to Arjuna. And go all through, you know it. But you have not been able to see it because it is not part of the books. I think the Honorable Minister will take initiative to ensure that the country is made available in authentic form only that Constitution which has been given to us by our founding fathers and constitutionally amended further. That will have 22 miniatures. Friends, we need to be extremely alert apart from our fundamental rights as to our fundamental duties. It's a time for us that we must turn out to be very good citizens. And from that perspective, I will make an appeal. Time is a constraint. I'll make an appeal. An individual. What can an individual do? An individual must immediately go to a new part which was added, part 4, capital A, fundamental duties. Read them, 11 of them. Initially there were 10, one was added later on. When you will read those 11 fundamental duties, you will find these are fundamental to our daily life. It takes no expense. We can do it. We must always take pride in being Indians. भारतीयता हमारी पहचान है. इस महान देश भारत के हम नागरिक हैं. इसकी अप्रत्याशित, अकल्पनीय प्रगति से हम अभिभूत हैं. दुनिया अचंभित है. भारत का लोहा दुनिया मान चुकी है. दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं भारत के बारे में कि आज के समय दुनिया में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति है. We today, friends, are the 5th largest global economy. We have marched ahead of Canada, UK, France. In 2 or 3 years, we'll be marching ahead of Germany and Japan. We'll be the 3rd largest global economy. We can't stop at that. So there was a time in our illustrious past when we were at peak. We have to reach that peak. And the Prime Minister with his vision is working in overdrive to secure that Bharat at 2047 becomes a developed nation, a global power. Because our Bharat, as is the spirit and essence of our Constitution, it stands for peace, harmony, stability. The only nation perhaps in the world that has never engaged in frontier expansions. We have suffered invasions. We have absorbed those people. Never believed in. It is a time, for the first time in our history, that the world recognizes in diplomacy power of Bharat. We are guided by one interest of the nation and welfare of the humanity. And that is why the entire world acknowledged the excellent outcome of G20, which was a global high benchmark in our soft diplomatic power. ये मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान ने हमें सब कुछ दिया है. यदि 3 संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपने दायरे में रहकर मर्यादित आचरण कर आगे बढ़ेंगे, तो भारतीय लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है.
I appeal from this platform that we are lucky to have highest brains heading these organizations. The executive is being led by the Prime Minister, a man who is a visionary, who thinks big, achieves with expedition, achieves for one and all, achieves at a dimension which we never imagined. We have robust judicial system. We have sound legislature. Let me remind you, boys and girls, when our Constitution was framed, you must find out who were the people who framed the Constitution. You will be enlightened to know that none of them was directly elected by the people. They were indirectly elected, one category, the large category. The second category was representatives of princely states. And the third, four, they were commissioners. One was in Rajasthan also, one each. Then, while the Constituent Assembly was in progress, we had division of the country. So part of the contingent left. The number was reduced. They were fired by the zeal of nationalism. They faced some of the greatest contentious issues, divisive issues of language, of boundaries. They overcame all those things, not by disruption, not by disturbance, but by dialogue, debate, discussion, deliberation. Therefore, the segment to which I belong, by virtue of being chairman of Rajya Sabha, I sometimes wonder, when the executive is marching on fast track, earning global laurels, giving relief to more than 1 billion people, making available an ecosystem where every Indian can unleash his or her energy, exploit potential, realize ambitions and dreams, where a mechanism has been developed, where power corridors have been sanitized of corrupt elements, when there is rigorous enforcement of the constitutional essence, equality before a law. There is none who cannot be beyond the reach of law. Everyone is. Some people were in doubt. I am pained with events that take place when destruction of public property takes place. We take on the law enforcing agencies and declare we have won because the barricade has collapsed. Our judiciary is a robust system, manned by very gifted people. There will always be issues between three organs because we are in a dynamic world. But issues have to be ironed out, have to be moderated. They don't have to be on public platform. They have to be in a structured manner. But with legislature, we need to do some homework. How efficient your legislators are, boys and girls, is in your hands. You have to take a call. Would you want parliament or assemblies to be dysfunctional? Would you want them to be ravaged by disruptions, disturbances? You certainly would want. There should be debate, dialogue. We had a great legislation. Earlier we used to have Dand Vidhan. Now we have Nyay Vidhan. But to my utter pain, the legal luminaries, the legal eagles that dominate the legal firmament, none came forward in Rajya Sabha to make a contribution. When you have an opportunity, a historic opportunity, when epochal legal mechanism is being developed, we are being unshackled from colonial regime. Why did you not make your input available? Your participation was not there. Young boys and girls, we may be gone. We will not be around, most of us, when Bharat is at 2047. But each one of you who is present in this house is a foot soldier of this journey. You are taking glory of Bharat. You will be ensuring
it be on incremental trajectory. You will ensure rightful place in the Committee of Nations what Bharat will be at 2047. And therefore, there are issues on which your silence will resonate in your ears for years to come. If you find something is unacceptable, please go by the diktat of your conscience, spirit of nationalism, belief in your nation, and try to put in correctional mechanism. इसीलिए मैं अंत में ये कहूँगा, हमारा संविधान का सबसे बड़ा सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें। हमारी देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है, इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है। संस्थागत आहुति आएगी, पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है, और इसका कारण है there is no one more critically, significantly stakeholder in governance than boys and girls like you. Your stake in governance is maximum. You would never want corruption. You want meritocracy to flourish. You would want that you have opportunities before you. Now you must know fully well, we are a country that is home to startups. We are a country that is home to unicorns unparalleled in the world. If you have an idea, put it in action. वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा सम्मान होगा। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत के उत्थान में जो भी कोई बाधा बनेगा, ये उत्थान का तूफान है। ये तूफान पॉजिटिविटी का है। ये तूफान ईश्वरीय शक्ति के द्वारा दिया हुआ है। ये तूफान दुनिया के हित के लिए है। हमारे 5000 साल की जो संस्कृति की विरासत है, उसको नमन का है। It is unstoppable. Rise of Bharat is unstoppable. Let us contribute to the nuclear speed, rocket speed of this growth. Thank you so much. That was the keynote address of the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar. He was inaugurating the Hamara Samvidhan Hamara Samman campaign. The Honorable Vice President reiterated that for democracy to flourish, all the three estates of democracy, the legislature, the executive and judiciary, will have to work in tandem, and the citizens have to be the vanguard of the democratic institutions. And now, Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of State, Independent Charge for Law and Justice, is presenting a memento to the Honorable Vice President of India, in the presence of the Attorney General of India, Shri R. Venkataramani, and the Secretary, Department of Justice. And now, the National Anthem. माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। इस विशेष प्रसारण से सिर्फ इतना ही। मैं शहसयार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।